7. Demography and health. Demography study. Study of human population. There are demographic process. There are 5 demographic processes: fertility, childbirth, okay, marriage, mortality, migration, social mobility. CBR, birth rate. CBR होता है total number of birth upon total mid-year population into 1000. Okay. Root death rate होता है total number of death divided by total mid-year population into 1000. 5 स्टेजेस होती है. क्या होती है? हाई स्टेशनरी स्टेज, फिर अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज होता है, फिर लेट एक्सपेंडिंग स्टेज होता है, फिर लो स्टेशनरी स्टेज होता है, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज होता है. डेमोग्राफिक गैप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट मैक्स इन लेट पार्ट ऑफ स्टेज 2, स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन अर्ली पार्ट ऑफ स्टेज 3, minimum in stage 1 and 4, negative in stage 5. India is currently at stage 3, both birth and death rate declining every year. India is currently at stage 3, both birth and death rate is declining every year. Demographic transition from high birth death rate to low birth to death rate. Population pyramid as used to compare between developing and developed nation. Shape, span और symmetry. Shape वो fertility pattern को दर्शाता है. Developing upright triangle, broad base, narrow tape. Developed में spindle shape. Span, life expectancy. Span, life expectancy, developing shorter, developed higher. Symmetry, sex ratio, developing asymmetry, developed symmetry. Census, once every 10 years. Last was in 2011-15 census of India. First census was in 1871. First disability census of India 1881. Big Indian divide. 1921 census. Census stop 0 March 0 horse. Okay. Literacy rate 75%. Number of literate upon total population is about 7 years. Male 82%, female 65%, highest Kerala 94%, lowest Bihar 64%. Also used in the calculation of PQLI, Physical Quality of Life Index, and SDI, Human Development Index. PQLI में 3 कंपोनेंट यूज लेते हैं. लिटरेसी रेट यूज लेते हैं, ठीक है. इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यूज लेते हैं. लिटरेसी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट. और तीसरा कंपोनेंट होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 year. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है, वो होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. एनुअल ग्रोथ रेट है 1.64 और डिकेडल है 17.64. ओके. बेस्ड ऑन दिस इंडिया एट वेरी रैपिड ग्रोथ फेज. इंडिया कहाँ पे है? वेरी रैपिड ग्रोथ फेज. Doubling its population in 35 to 47 years. Sex ratio. Number of female upon number of males into 1000. 943 female पे 1000 मेल है. Highest Kerala, lowest Daman and Diu. Child sex ratio. Yes, sir. Number of females 0 to 6 year. Number of males 0 to 6 year. 1000. Okay. Highest Mizoram, lowest Haryana. Less than 5 to 10 pregnant 3%, infant 3%, urban rural. Census taken by Census Commissioner under Ministry of Home and Affairs. Ministry of Home and Affairs के अंदर होता है census. Sample registration system.
Most accurate collection system only dual record. IMR infant mortality rate 26 infant death rate per थाउजेंड लाइव बर्थ मतलब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से 26 बच्चों की डेथ होती है एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी 88 मैटरनल डेथ इन 1 लाख लाइव बर्थ मतलब 1 लाख बच्चों को जन्म देने पर 88 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 32 डेथ इन 1000 अंडर 5 बहुत ज़्यादा है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट 20 डेथ पर थाउजेंड तो बर्थ रेट along with growth rate on decadal ये लो बर्थ रेट पे हैं सब along with growth rate और decadal basis के perinatal mortality rate 18 death per thousand live birth perinatal mortality rate 18th death per thousand live birth stillbirth mortality rate 21 death per thousand live birth से 21 लोगों की stillbirth में भी mortality rate come under Ministry of Home and Affairs National Family Health Survey once every 5 to 6 years टोटल फर्टिलिटी रेट है अभी इंडिया की 2.0 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां सर्वे हुआ है 2019 से 2021 के बीच में डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे इम्यूनाइजेशन कवरेज लेवल once every 5 years वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बर्थ विथिन 21 डेज पे रजिस्टर करना जरूरी है डेथ का भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है विथिन 21 डेज जन्म के 21 दिन के पहले पहले आपको एक तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है और डेथ सर्टिफिकेट भी मृत्यु के 21 दिन के बाद से पहले पहले बनाना है मैरिज डिपेंडिंग ऑन द स्टेट बर्थ ऑफ चाइल्ड टू एनआरआई कपल abroad should be registered within 60 days upon arrival in country बर्थ ऑफ चाइल्ड टू एनआरआई कपल मतलब देश से बाहर जो बच्चा जन्मा है उसको रजिस्टर करना विद इन 60 डेज के अंदर होता है इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन ऑफ बर्थ बर्थ का रजिस्ट्रेशन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट की टोटल फर्टिलिटी रेट number of children born to couple in their entire reproductive lifespan also played complete family size goal is 2.1 gross reproductive rate total number of girl children born to a couple in their entire reproductive life इसको बोलते हैं gross reproductive मतलब gross जो जिंदगी में जो हासिल किया total number of girl children born to a couple in their entire reproductive lifespan एक कपल ने फीमेल बच्चे कितने पैदा किए ओके गर्ल्स चाइल्ड नेट रिप्रोडक्शन टोटल नंबर ऑफ लिविंग गर्ल्स चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ स्पेन माइनस मोर्टेलिटी हाँ that is one of the most important fertility indicator to achieve NRR1 contraceptive use and prevalence at CPR India 19.1 should be more than 60% of couple protection rate. Contraceptive advisable is sterilization, especially vasectomy. Tubectomy and vasectomy. Advisable is sterilization, especially vasectomy. CBR group birth rate, CBR at PFR plus 1. Okay. Child woman ratio 0 to 4 years child, 15 to 49 year women in reproductive age in 2000. General fertility rate. Total number of live birth at 15 to 49 year women in reproductive age. Dependency rate. Number of non-earning depending on the earning for survival. जो प्लान करे परिवार. Family planning and contraception. Conventional contraceptive at the time of intercourse. Male condoms, spermicides, none of the 9 rupture of ectosomes, interceptive after intercourse. Also, post-coital या emergency contraceptive
इसमें कंबाइंड ओसीपी जिसको बोलते हैं यूजीपी एंड लेंसी लेस देन 72 हर्ट्ज के अंदर देना होता है। प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स पीओपी लेस देन 72 हर्ट्ज के अंदर देना होता है। हाईएस्ट एफिकेसी 5 दिन के पहले पहले वो होता है आईयूडीज की हाईएस्ट एफिकेसी होती है। और मिथीप्रेस्टोन को भी 72 आवर्स के बिफोर देना होता है। हाई डोज एस्ट्रोजन 5 दिन तक देना होता है। हाई डोज एस्ट्रोजन। एलिजिबल कपल मैरिड लाइफ इज एट a reproductive age 15 to 49 years. Eligible for available contraceptive. Eligible couple rate is 115 to 180 per thousand population. CPR couple protection rate. CPR number of protected couple upon total ECS. Eligible couple number of protected couple upon total eligible couple into 100. CPR more than 60%. Now India CPR close to 67%. Net reproductive rate. Our 1 minus demographic fertility indicator. 1 minus net reproductive rate NRR. 1 minus demographic fertility rate. PL index used to assess failure rate of contraceptive. Used to assess failure rate of contraceptive. Efficacy rate expressed per 100 women per year. Expressed for PL index होता है PI होता है used to assess failure rate of contraceptive और efficacy rate. Okay. PI होता है Pierce index total number of accidental pregnancy upon total month of exposure into 1200 male condom 2 to 14 vaginal response 9 to 20. Higher PI of failure rate is 5 to 21. 2 ring longer transparent पर यूरिथ्रिन होता है फीमेल कंडोम। रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। HIV प्रोटेक्शन करता है। इंसर्टेड 2 hours period not removed 2 hours after intercourse. Vaginal sponge नॉन कन्वेंशनल होता है। Insert 4 hours period and not removed 4 hours after intercourse. Lead is toxic shock syndrome. Could lead to toxic shock syndrome. Barrier method spermicide nonocginol 9. Here index 9 to 20. Okay. Vaginal sponge. टुडे नाम है उसका। वेजाइनल स्पंज का नाम है टुडे। वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव्स टुडे। कंबाइंड ओसीपी। कंबाइंड ओसीपी क्या है? एस्ट्रोजन देना है 30 mcg प्लस levonorgestrel 150 mcg per pills. First 21 pills plus 7 tablet of ferrous fumarates. माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। माला डी RS3 पर पैकेट 3 रुपये लगता है माला डी का। माला एन माला डी IUD oldest लिपेस लूप discarded due to highest failure rate. लिपेस लूप को तो discarded कर दिया due to highest failure rate. Most common copper T380A. India and worldwide shelf life 10 years. Copper 375 shelf life 5 years. Multi-loaded copper T जिसको बोलते हैं multi-loaded copper T. लिपेस लूप ऐसा दिखता है। सेफ्टी कोयल ऐसा दिखता है। टी कॉपर 200B ऐसा दिखता है। टी कॉपर 380A ऐसा दिखता है। ओके। इसमें डबल बैंड होता है। ओके। 200C ऐसा है। नोवा टी ऐसा है। कॉपर 7 है। मल्टी लोडर 375 ऐसा है। डायफ्राम क्या होता है? बैरियर मेथड होता है। एक तरह का नॉन कन्वेंशनल होता है। इंसर्टेड 6 hour पीरियड एंड नॉट रिमूव्ड 6 hour आफ्टर इंटरकोर्स. Complication toxic shock syndrome along with spermicides. Not preferred in developing country. Female looking for temporary spacing. क्या बैरियर मेथड है? कि नॉट प्रिफर्ड इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में ये प्रिफर्ड नहीं किया। कॉम्प्लिकेशन ये भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है। अलॉन्ग विथ स्पर्मिसाइड यूज करते हैं इसको। अंतरा एक गोली है जिसको डिपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट डिपॉट फॉर्मुलेशन बोलते हैं। जिसको बोलते हैं डिपॉट फॉर्मुलेशन। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव IM once every 3 months. इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव ये IM के रूप में देते हैं once
एवरी 3 मंथ में। साइड इफेक्ट है इरेगुलर साइकिल, ये साइकिल को इरेगुलर कर सकती है। इसमें होता है मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन आईपी 150 मिलीग्राम पर कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन होता है के अंतरा कार्यक्रम। छाया, जिसमें आता है सहेली, नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल ओसीपी, डेवलप्ड बाय सीडीआरआई लखनऊ। इसमें आता है ऑर्मिलोक्सिफेन, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन मॉडिफायर होता है, वो होता है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन मॉडिफायर। पीएल इंडेक्स होता है 1.84 टू 2. बहुत अच्छा है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पीसीओडी, पीसीओडी में एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वंस अ वीक पिलेरी, वीक में एक बार लेने वाली पीलिया, जिसको बोलते हैं छाया, जिसको बोलते हैं सहेली। गॉसिप और मेल पिल्स, परमानेंट एजोस्पर्मिया इन 10% ऑफ यूजर्स। प्रिवेंटिव, ये एक तो नीचे होम बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है, जिसको बोलते हैं यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट, के प्रिवेंटिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव पीडियाट्रिक्स एंड गेरियाट्रिक्स के आरसीएस प्रोग्राम 1997। अर्लियर देयर वाज जननी सुरक्षा योजना 2005 JSY, because the focus was on mother care. Now JSY is a Janani Shishu Suraksha Karyakram 2011, JSSK, obstructive and newborn care. Two type of obstructive care in India, essential obstructive newborn care, emergency obstructive newborn care। दो तरह की केयर होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर इमरजेंसी पे बेसिस पर और इसेंशियल बेसिस पे। इसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर में आता है कैन बी गिवन एनी एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर गिवन एट एमसीएस लेवल 1। हाई कंपोनेंट है, जिसमें प्रेगनेंसी करना है, एंटीनेटल केयर करना है, सेफ डिलीवरी करवाना है, पोस्टनेटल केयर करना है और न्यूबॉर्न का केयर करना है। ये 5 कंपोनेंट होते हैं किसके, इसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर का। इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर इज फर्दर ऑफ 2 टाइप। बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर गिवन एट एमसीएस लेवल 2। 7 कंपोनेंट होता है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, इसको प्लेसेंटा को मैनुअल रिमूव करना पड़ता है। फिर ऑक्सीटोसिस देना, मतलब ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया, एंटीबायोटिक्स, एंटी कन्वल्जेंट्स, असिस्टेड डिलीवरी, वैक्यूम एस्पिरेशन, न्यूबॉर्न रिसब्सिटेशन। फिर आता है कंप्रेहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर। Comprehensive emergency obstetric newborn care given at MCH level 3 included provision for blood transfusion plus surgery if required. Antenatal visit recommended 13 to 14 to 0 to 7 child POG once a month or 7 months once a month. Twice a month to 9th month onward once a week for antenatal visit। देखो 0 से 7 मंथ में once a month आएंगे तो 7 विजिट हो गई। 8th मंथ में twice a month आना है। 9th मंथ में once a week, मतलब 4 to 5 विजिट हो जाएगी। तो 7 दोनों और 4 5 13 विजिट, लगभग 13 से 14 विजिट होती है। WHO का बोलता है मिनिमम एंटेनाटल विजिट मोर देन 4 होना चाहिए। फर्स्ट विजिट रजिस्ट्रेशन के बाद, सेकंड विजिट 14 से 26 वीक में, थर्ड विजिट 28 से 34 वीक के बीच में, एंड फोर्थ विजिट 36 वीक। टर्म प्रेगनेंसी, जिसको बोलते हैं टर्म प्रेगनेंसी। पोस्ट नेटल विजिट MPW या ANM 3 से 4 विजिट लेनी होती है। इंस्टीट्यूशन डिलीवरी डे 3 पे, 7 पे और 42 पे। होम डिलीवरी पे डे 4 पे होम डिलीवरी में 4 विजिट होती है। डे 1 3 है, 7 है, 42। आशा को 6 to 7 विजिट देनी होती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में डे 3 पे देना है, 7 पे, 14 पे, 21 पे, 28 पे और 42। होम डिलीवरी पे 7 विजिट होती है, डे 1 3 7 14। बर्थ वेट एवरेज इंडियन इज बर्थ वेट is 2.8 kg। WHO classification low birth weight below 2.5 kg, 18% prevalence। mild low birth less than 2 kg, very low birth 1.5 kg। Preterm less than 37 weeks, term 37 to 42 weeks, post term more than 42 weeks। Small for death,
small for gestation. Term and post-term low birth weight is less than 10% of gestational age. Intrauterine growth retardation measured by Sartor scale. Measured by Sartor scale. Okay, birth length centimeter. Best indicator of growth. Development, growth weight, weight for age. Best development weight for age. Growth के लिए होता है weight for age. Weight for age is best indicator होता है.
लोअर कांच का लगवा के एसी लगवा देते ना पड़ेगा कुछ तो, वो 2 मीटर के कांच का लगवा देते इसको बोलना पड़ेगा फिर हमें। कौन डोनेट कर रहा है अपना? तो ऐसी कौन डोनेट कर रहा है? देखते हैं अभी एसबीओ वालों को बोला है बहुत मक्खियाँ आ गई यार, बहुत खा रही है। एक बार खा लेते पूरा शरीर। बच्चों की दवा लेनी पड़ेगी This lot of sheets. Okay. Drawn between weight and age, two reference lines. WSO severe malnutrition and message. Mean upper arm circumference less than 11.5 centimeters. Low birth weight for age, underweight, acute and chronic malnutrition. Low weight for age. इसको बोलते हैं chronic. Low weight for height, wasting. अगर लो वेट फॉर एज रहा तो अंडर वेट एक्यूट ऑन क्रोनिक माइग्रेन लो वेट फॉर हाइट वास्टिंग एक्यूट माइग्रेशन लो हाइट फॉर एज रहा तो लो हाइट फॉर एज रहा तो स्टंटिंग स्टंटिंग क्रोनिक माइग्रेशन ये करेगा क्रोनिक माइग्रेशन स्टंटिंग वास्टिंग ऑन अंडरवेट होता है लो वेट फॉर एज रहा तो अंडरवेट को बोलेंगे लो वेट फॉर हाइट रहा तो लो वेट फॉर हाइट रहा तो वास्टिंग बोलेंगे वास्टिंग में लो वेट फॉर हाइट रहेगा स्टंटिंग में लो हाइट फॉर हाइट रहेगा स्टंटिंग लो हाइट फॉर एज मतलब छोटा रह गया बच्चा स्टंटिंग रह गया वास्टिंग में मतलब वेट कम रहा उसका बट हाइट अच्छी है लो वेट फॉर हाइट हो गया लो वेट फॉर एज हो गया एक्यूट माइग्रेन WHO ग्रोथ चार्ट ड्रॉन बिटवीन वेट एंड एज किस में बनता है वेट और एज के बीच में बनता है टू रेफरेंस लाइन होती है 50th percentile are boys or third percentile girls. Okay, randomized to URC based on NCS. ICDS growth charts. Girls wait for S birth to 5 years as per the WHO standards. Integrated Child Development Scheme. Integrated Child Development Service. Drawn between weight and age. 3 reference curve. Standard line -2 standard deviation line -3 standard line. Green road to health. Yellow mild more malnutrition. Red severe malnutrition. Patient premium. देखो ग्रीन गुड है येलो मॉडरेट और सीवियर सीवियर हो गया ओके ICDS based on the multi-centric growth reference study standard WHO 2006 breastfeeding exclusive breastfeeding 0 to 6 month IG होता है DH होता है आयरन होता है लो कैल्शियम होता है एनर्जी कंटेंट इज 65 किलो कैलोरी per 100 ml protein 0.9 to 1.1 gram per 100 ml started after birth normal vision under AV more than less than 1 hour के started after the normal less than 1 hour cesarean में less than 4 hour oxytocin release early explosion of placenta lesser in maternal mortality school health recommended Boring Committee school health recommended by Boring Committee Thailand by Renuka Rao Committee 1952 health school environment classroom should be have like 10 40 students 10 square foot per space होना चाहिए square feet होना चाहिए प्रत्येक कक्षा urinal होना चाहिए 60 पे एक one sanitary latrine होना चाहिए per 1,100 में door plus window minimum 20% of floor area dash minus 5
frequency of school health examination once every 6 months. और हर स्कूल गवर्नमेंट में अनमोल प्रोग्राम जो एक तरह का कौन सा होती है आशा आशा करता है ये ना नहीं है ना रेगुलरी नर्स एडवाइस अनमोल अनमोल होती है रेगुलरी नर्स एडवाइस टैबलेट बेस्ड कंप्लीट होता है ऑल आरसीएस प्रोग्राम होते हैं इसमें related data entry is done through this software. Environment and health water हेरोक apparatus ये है हेरोक apparatus इसमें अपन क्या वाटर का क्लोराइड लेवल पता करते हैं हेरोक apparatus used for estimation of chlorine demand इसमें क्या होगा used for estimation of chlorine demand used for estimation of chlorine demand compromise of 6 white cups plus 1 black cup stars iodide and not and 3 dp can be disinfected 45 or 55 liter for 55 liter water where is the number of cup this is the first to soak color thing bleaching powder 35% available okay main disinfectant function of chloride to hypochlorous acid क्लोरोस्कोप ये है क्लोरोस्कोप फ्री रेडिकल क्लोरीन is emitted by chloroscope OT test drinking water में more than 5 milligram swimming pool में more than 1 drinking water to kill cyclops more than 2 milligram okay ये काटा thermometer used to measure low air velocity काटा thermometer use कर लो air velocity question on the red bulb पता करने के लिए sling psychrometer used to assess the humidity level sling psychrometer humidity national air quality index CPCB central population control board good 0 to 50 green satisfactory 51 to 100 moderate 101 to 200 poor 201 to 300 very poor 301 to 400 severe 401 to 500 NPI add parameter to calculate नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को 8 पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं हम देखो कोड कब मानते हैं जब सेटिस्फैक्टरी 51 टू 100 में और मॉडरेट 101 टू 200 में पुअर है 201 टू 300 वेरी पुअर इतना है सीवियर इतना हो गया ऐड पैरामीटर टू कैलकुलेट PM 2.5 PM 10 सल्फाइड नाइट्राइड PV NH3 ammonia ozone carbon monoxide other component of the environment sound level tolerable sound level for human ear is 9 less than 90 decibel more than 90 decibel auditory fatigue आती है उससे 100 से ज़्यादा अगर permanent hearing loss भी हो सकता है more than 150 students student direct tympanic membrane rupture होता है इसमें direct tympanic membrane rupture हो सकता है to test place should be hospital wards recommended level 20 to 35 decibel light brightness point of source measured by candela tells about luminous intensity housing 3 criteria for every crowding our crowding okay 3 criteria for our crowding Indian household more than 2 person per capita space less than 70 to 90 feet square per minute sex separation absent in less than 9 years radiation greatest non-made source is X-ray. Greatest man-made source is X-ray. Maximum radiation seen in the Rajasthan, India. अरे राजस्थान में maximum radiation होती है क्या बात है? Permissible radiation exposure per person per year is less than 5. Permissible radiation exposure in pregnancy should be thickness of lead apron should be okay. Best disposal. 3 indicator of strength like biological oxygen demand, chemical oxygen demand, or suspend solid. More than 300 gram per liter biological oxygen demand. BOD indicate strong syringe.
For solid waste disposal, best method is the sanitary landfill. Solid waste disposal के लिए best method है sanitary landfills. Depth of water seals will be more than 2 centimeters. Sanitary sanitation area. Depth of water seals will be more than 2 centimeters. Medical immunology. Anopheles. Sophisticated mosquito. 5 at 45 degree to the surface of एनोफ्लिस मच्छर होता है ना जो करता है मलेरिया मादा एनोफ्लिस फीमेल एनोफ्लिस साइट एट 45 डिग्री एट द सरफेस ऑफ स्किन ब्लैक स्पॉट ऑन द मार्जिन ऑफ विंग पे ब्लैक स्पॉट दिखेंगे एनोफ्लिस में ऐसा दिखता है कि एडिक्स टाइगर मस्किटो जो एकदम साइड पैरेलल टू सरफेस ऑफ द स्किन बेंड एट नेक हंस बैक पोस्चर एस नेक कैन करेगा वाइज टेस्टिंग ऑन द एब्डोमेन डिजीज डेंगू येलो फीवर जीका चिकनगुनिया फीवर ठीक है सेंड फ्लाई फ्लाई में ये बहुत फेमस सेंड फ्लाई क्या करता है काला अजर करती है डिजीज लाइक काला अजर लेशमेनिया डोरोमानी ओरिएंटल शॉर्ट लेशमेनिया ट्रोपिका सेंड फ्लाई फीवर और एयर फीवर टोस्काना वायरस कैंडीपुरा सिलिकन वेस्टिपुलोस स्टोमेटाइटिस वायरस लाइव इन्फ्लुएंजा एंड insecticide DDT hormone Anopheles larva inhalation fly Anopheles larva rests parallel to the water surface as it does not have second tube to directly absorb oxygen via skin. Anopheles में second tube नहीं होती है ठीक है rest at 40 to 45 minutes to water. Culex larva angle to water surface. Mansoni larva attached to the roots of aquatic plants. ये है क्यूलेक्स एडिस लार्वा ऐसा दिखता है रेस्ट एट 40 टू 45 वाटर सर्फेस में सीपन ट्यूब होती है सीपन ट्यूब हो गया उसका मानसूनी लार्वा अटैच्ड टू द रूट ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स ओके मॉस्किटो कंट्रोल मेजर फिजिकल मेथड सोर्स ऑफ रिडक्शन सोर्स को रिडक्शन कर देंगे बेस्ट मेथड एज इट इज द प्राइमोर्डियल लेवल प्रिवेंशन source reduction best method is it is the primordial level of prevention mosquito net size of each wall should be okay. Chemical method DDT and melathin anti-adult poisons at biomolecular level they inhibit ACH enzymes okay Paris green anti-larval stomach poison biological method Gambusia fish H14 Coelomycos Coelomyces Toxorhinitis biological method Gambusia fish से कहाँ आ सकते हैं अपन Toxorhinitis nutrition and health balanced diet तो देखो कार्बोहाइड्रेट 55% 30% फैट लेना और प्रोटीन लेना है 15% प्रोटीन 30% फैट और 55% कार्बोहाइड्रेट बैलेंस डाइट होता है उसमें प्रोटीन 10 to 15% डेली लेना है अपने को फैट 30% कैलोरी कार्ब्स हाई साट बेस्ट स्टैटिस्टिकल डायग्राम विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होता है सबसे पहले होता है जीरोथेल्मिया और बाइटोस स्पॉट्स इसको बोलते हैं 10-1B the most
Xerophthalmia 1B. Most specific manifestation virus स्पष्ट. First symptom night blindness. First sign conjunctival cirrhosis. फर्स्ट सिम्टम पूछे तो अपने को नाइट ब्लाइंडनेस लगाना है विटामिन ए का. साइन पूछे तो कंजक्टाइवल जीरोसिस. और फर्स्ट मैनिफेस्टेशन नाइट ब्लाइंड, सबसे पहले यही आएगा. पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इफ नाइट ब्लाइंडनेस मोर देन 1% और बाइटर स्पॉट मोर देन 0.5%. कंजक्टाइवल जीरोसिस जिसको बोलते हैं कंजक्टाइवल 1A. ड्राई आई होता है receding bank after see the tired appearance. क्या दिखता है इसमें? receding bank after the see tired dry eye ऐसा दिखता है एकदम. Those vitamin A days 0, 1 and 4. Less than 1 year 1 lakh international unit. More than 1 year 2 lakh 2 lakh 0, 1 14 करेंगे अपन. ये इसका डोज रहेगा. अब आता है गोल्डन राइस. गोल्डन राइस क्या है? जीएमसी जेनेटिकल मॉडिफाइड सीरल कलर ड्यू टू बीटा कैरोटीन. इसमें होता है ओके गोल्डन राइस. पॉलिश राइस चीनी होता है एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ थियामिन. पॉलिश राइस खाने से थियामिन की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से अपने को उपयोग हो सकता है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी या बेरी. पॉलिश राइस खाने से क्या होता है? बेरी. लेथाइरिज्म क्या होता है? टॉक्सिन. क्या होता है? बीटा ऑक्सिलिल एमिनो एलेनिन बेस्ट टॉक्सिन हो जाता है. ड्यू टू अडल्ट्रेंट खेसरीदार फूड आइटम और अडल्ट्राल लेथाइरिज्म ऐसे टांगे हो जाती है.